तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप होता है दूध का। यहाँ पे एक गाय होती है, उसको यहाँ पे ना बांध दिया जाता है, उसको लाते हैं, उसको यहाँ से गले से रस्सी बांध के या तो इससे बांधते हैं या फिर इससे बांधते हैं कि वो हिल ना पाए। फिर यहाँ से भी 4-5 लोग उसको पकड़ते हैं, उसको यहाँ बांधते हैं, ठीक है। वो लड़की जब 1 साल या 2 साल की हो जाती है, सो 1 या 2 साल की होती है वो, ठीक है। सो लाइक शी इज अ फीमेल, नो। सो व्हाट वी डू इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मिल्क इज वी इंजेक्ट हर विद सीमन। हम एक मेल बुल को, उसको भी हम सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं हम लोग। तो हम मेल बुल को लेते हैं, या तो मशीन होती है या फिर हाथ लोग होते हैं, वो कुछ लकड़ी का या कुछ ऐसे मशीन सा कुछ कर्वेचर सा बनाते हैं, या हाथों में कुछ ग्लव्स या कुछ भी पहन के उनको लिटरली मास्टरबेट किया जाता है, उनको बांध के। और सबसे पहले उनका सीमन कलेक्ट कर, मेल का सीमन निकाला, फिर वो हम लाते हैं एक ऐसे डब्बी में भर के, फिर एक इंजेक्शन लेते हैं हम और एक बड़ी सी ना रॉड लेते हैं, उसके वजाइना में उसको बांध देते हैं। अगर तुम वीडियो देखोगे तुम देख नहीं पाओगे। तो ये हर डेयरी में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तुम्हें रैक दिखेगा, कहीं भी तुम जाओ तुम्हें दिखेगा। और इसको पता है क्या कहते हैं? इसका नाम ही रेप रैक है। और ये देख भूखा है ये, और ये रोते हैं क्योंकि इन्हें अपनी माँ से अलग कर रखा है और हम इनका दूध पी रहे हैं। तो लिटरली शी इज टाइड अप एंड शी मूव्स, शी ट्राइज टू मूव अवे एंड वी 3-4 लोग लगते हैं उसके लिए, नहीं तो कभी कभी और ज्यादा, कभी कभी 2 में भी हो जाता है क्योंकि वो इतनी ज्यादा स्लेव बनी हुई रहती है। दे आर ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट्स, ऑल दीज फीमेल्स आर ट्रीटेड एज मशीन्स एंड ऑब्जेक्ट्स, ऑल ऑफ दीज फीमेल्स दैट यू सी हियर ओवर हियर। तो यहाँ पे वो होता है, इंजेक्शन डलता है उसके पीछे, और पीछे अपना एक बंदा ना हाथ डालता है, एक्चुअली हाथ एनस में जाता है और फिर इंजेक्शन वजाइना में जाता है। हाँ, अगर यही कोई चीज़, यही सेम चीज़ किसी और के साथ हो, अगर हम किसी को पकड़ के, मेल डॉग को ले लें जो ब्रीडिंग इंडस्ट्री में हो रहा है, उनको मास्टरबेट करें या उनका लड़की के साथ ऐसे हाथ वाथ डालें, विल यू कंसिडर दैट इज एज एक्सप्लॉइटेशन? डेफिनेटली यू सेम ऑफ कोर्स। दैट इज सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन। आई नो दीज आर स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, और अपने ह्यूमन सोसाइटी में मतलब 2 वो हैं जो बहुत बुरे माने जाते हैं, एक है मतलब रेप और एक है मर्डर या हत्या, किसी का वो करना। तो दूध की शुरुआत रेप से होती है और दूध का अंत मर्डर से होता है। See, bro, I agree with everything you say. That the animal industry is cruel, it's exploitative towards the animals, everything is alright. But one thing I find extremely annoying, in fact, extremely disturbing with the activists is that they literally compare animal suffering with things like rape and slavery. I mean, how is that even a valid comparison? You know now that these things are very much human centric concepts and okay, 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 fine. At least you guys agree that human beings are mentally, emotionally, psychologically more complex than animals, right? So when such things happens with human beings, it has a, I mean, altogether different social meaning. And the experiences that human survivors go through is undeniably far, far, far more psychologically complicated than what animals go through, right? So, at any point of time, this kind of comparison is ridiculously invalid. Okay, and all I could conclude is that activists are just trying to emotionally trigger people so that they could prove their point. So, what's your take on this? Yes, you're right. The experience of human victims and animal victims is indeed different in a lot of ways. But this is a very, very wrong interpretation in how the comparison is actually being made. Animals, just like humans, have their own lives, and that means they have an interest in their own lives. That means they want to live, and they want to live with freedom without being harmed. Okay? But this is definitely not what the reality is, right? These poor animals are being forcefully brought into existence through artificial breeding, they are being confined and tied up, being traded. Basically, they are treated merely as commodities so that we can use their bodies for different purposes. Now, when any sentient being means living beings who have the capacity to feel pain, suffering, and a wide range of other emotions are seen merely as a property to others, we directly deny the fact that every being exists for their own sake. Their lives and their freedom matters morally to themselves, and they're not to be looked upon simply as resources for others to be used or abused. Now, the way we treat these animals is exactly similar to the mechanism of human slavery that used to be the norm in some countries in the past. This is where the comparison is actually being made. The fundamental structural similarity and prejudicial thought process that is operating behind the two. Now, coming to the rape analogy. Here also, in no way we are comparing the exact experiences of the victims. When animals are forcefully impregnated for the purpose of breeding, you can see the visuals yourself. How each animal desperately wants to escape the helpless condition they are being put into. Do you think any of them peacefully consent into what is being done to them? Isn't it a clear violation and disregard to their bodily autonomy? They too, like human beings, have their preferences in how to be treated and how not to be. Think about it yourself. Isn't it similar to how any human being would resist to a sexual assault? Hmm. While I agree to most of what you said, but still, yeah, animals are not smart enough like human beings. So the most they can feel is a few moments of pain and discomfort. So I still feel that the rape comparison is a bit of an exaggeration. Look, if being smart enough is your main criteria, then think about a human matter.
If similar unfortunate incident were to happen to a human child, who, by the way, are also not smart enough like adult human beings, right? So, would you not call it an assault in that situation? Animals are like children only. They are innocent. They just crave love and affection. They trust us, and we betray that very trust. Bro, please accept it. This is the reality. We have failed animals in the ugliest ways possible.